Amazing. I actually have to say that the only reason I'm here was because of this campaign. When they approached me to do the event, and I said, oh my God, you know what? They have this new campaign that came out and that I just saw on TV, Like a Girl, and I would definitely want to be a part of this because it's such a great thing to give young girls, impressionable girls, that kind of confidence. You know, these girls lose their confidence at puberty because society keeps telling them that you can't do this, this is not how you should be, this is not what you should do. I think we just need to stop doing that. And I feel truly fortunate because my parents I have two brothers, and they raised me no different than them. And I honestly thank them so much from the bottom of my heart that I'm able to do what I want to do, to make the choices that I want to take, and do them all proudly like a girl. Yeah, that's true. This is an amazing video. I know that it was very short, but you guys can check out the longer video if you want. It's on YouTube. It's on Whisper's official page. Please do go and check it out. Share it because it has an amazing message and it will definitely resonate with every woman, every girl, every child, everybody that you know. It will definitely send that message across. Also to all the men, क्योंकि जब आप ये देखते हो तभी आपको समझ आता है कि oh my goodness, that's right, हमें पता भी नहीं था, we didn't even realize that this is actually the message we're sending out without having realized what it is. So now, on this occasion, I would request Sakshi to showcase pride in unveiling the Like a Girl and Proud movement that Whisper has begun. Can we get that amazing looking...
So 7 in 10 girls in India feel pressurized to conform to the way a girl is supposed to act and feel. 6 in every 10 girls in India become less in activities on reaching puberty. These are just very few statistics. This was a survey that was conducted recently by Nielsen in association with Whisper. Now, in the wake of India's success at the 2016 Olympics, it's amazing to see that the phrase "like a girl" has been completely turned around on its head. And I want to ask a question to Sakshi based on the surveys, which is that since it does say, Sakshi, जैसे कि आपने पढ़ा भी सर्वे पर लिखा है कि 6 में से 10 लड़कियों स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देती हैं जब वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, नहीं करना चाहिए? वो करती हैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी बहुत टॉन्ट करती है, वरना मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मैंने उनका नहीं सुना और कंटिन्यू किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करना चाहते हो खुल के करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी दुनिया कुछ भी don't care. Awesome. And be proud to do it like a girl, you guys. Yeah. Okay. Oh, I thought I asked you a question also. Oh yeah. Sonakshi, ऐसी कोई भी चीजें हैं जो लोगों ने आपको बोला था कि you can't do this because you're a girl. ऐसा कुछ? I'm sure that in the industry, before the industry, sometime in your life, people love expressing their opinions, ना, telling you what you can't do more than what you can do. अगर बोला भी होगा तो मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मैंने सुना नहीं होगा. Which is why I'm here where I am today. And like I said before कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि मैं अपने भाइयों से कम हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ. So I feel it's very important. I'm sure even Sakshi's family has supported her immensely, which is why she is where she is today, and she's been able to, bring back the medal from the Olympics. So I feel एक very strong support system का होना भी ज़रूरी है. And honestly, not only families, friends, relatives, anybody who's around you in that circle, supportive होना बहुत ज़रूरी है. Especially जब लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, when they reach that age कि वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देती है, उन्हें understand करने लगती है. I feel it's very important to show support at that very age, जो कि a lot of us still today, ये statistics के मुताबिक we don't have. So I feel it's very important to be supportive, whoever you are, to young girls, impressionable girls, and make sure that they go ahead in life with whatever it is that they want to do. Yeah, awesome. Okay. Now on that note, talking so much about teenage girls and all of that, I would like to call on stage a few teenage girls from the audience. Campaign, the Like a Girl campaign. So just share your thoughts with me. I just want to hear what you guys have to say about that. All right. Just check. Yeah. Awesome. Just your name is? Aapka naam kya hai? My name is Charmi Shah. Charmi Shah. Yeah. All right. Bataiye, tell me. Okay, I feel really good to be here because firstly it's like a Girl campaign, and this is the first time something like this is happening in India. So it's a really good movement because many times, like, I'm a sports player myself, and I have heard stuff like, oh, why are you playing this? This shouldn't be your career. And I'm glad this is happening because it's an eye-opener for so many people. That's great, man. Awesome. Okay, who else do we have? Thank you so much, Arshia. Hi, I'm Arshia. Arshia, all right. So firstly, I'm like lucky to be here and witness all the experiences that Sonakshi ma'am and Sakshi ma'am have shared. And I'm really, really fortunate to be a part of this campaign. And I hope
change the opinion soon. Awesome. And That's we will. awesome. So Definitely. yeah. Can you just have your mic and pass it on? All right. Aapka naam? Apurva, Apurva, hi. So I remember when I expressed, I wanted to learn to drive. I expressed my desire that I get my license, and I was discouraged. Your brothers will ride you around. Even my aunties were like, "No, we don't have road sense. We don't have driving sense. Why do you want to go through all that?" My opinion was changed after everything, the survey, and listening to. And yes, I'm gonna go give that test, get my license, and not only drive but also parallel park like a pro and like a girl. Outstanding. Good luck to you for that. And whoever told you these things, please tell them to come with me for a drive. I'll take them for a very, very long drive. Sure, my brothers. Basically, what's happening here is an eye-opener for every girl in this room, including me and everyone, actually everyone in India who's seeing this campaign. So, these survey statistics, actually, they remind me of the fact that even I have been told that, oh, you play like a girl, and you fight like a girl, and you hit like a girl. And because I also turned 18 recently, I'm hearing a lot of, oh, you drive like a girl also. And I did take these as insults, and I did feel low about myself. But I think after being here today, I'm going to take them as compliments because girl means doing it with excellence. So next time someone tells me this like a girl, I'll say, yeah, I do because I am a girl and I'm proud to be one. Or you should just say, so should you? Yeah. Anybody else has anything to say? All right. Thank you, girls, so much for coming here and sharing. I mean, we're all sharing our experiences, and I wish you all the very best in whatever it is that you choose to do and wish to do in life. So all the best, and do it like a girl. Yeah, and proud. Thank you guys so much. You can resume your seats now. Thank you. Thank you. Sweet. I like meeting these kids. Yeah, so do I. Is my mic on? Yes, it's on. Check. All right. Now, we'd like to take this opportunity to announce and open the Like a Girl challenge to all the girls, including all the girls on stage who are just asked to get off the stage. Let's show this world that there is nothing a girl can't do or shouldn't do. Role models like Sakshi here with us have already challenged stereotypes to win accolades in fields that girls aren't supposedly good enough for. Now, it's our turn. I was once told that girls shouldn't lift weights, shouldn't work out, because, oh my goodness, what will they say? Kya bolenge log? Kaisi dikh rahi ho? All that. So why don't I do that right now, right here, like a girl. Right. Oh, here it is. Awesome. बट आज नहीं होगा. अच्छा तो क्या दिखाना चाहती हैं आप? क्या साक्षी हो जाए? कम ऑन.
आपने क्या कहा जब हम पंजा लड़ा रहे थे? So sweet. All right. So to the rest of the girls in the audience who's watching this, who hopefully will be inspired hearing about the campaign and everything, please tell us your story, videos, pictures on how awesome you are. Play, fight, and run, throw, dance, jump, drive, work like a girl. Please like the Whisper India social pages and upload your posts, tagging Whisper India on Instagram. Yes. Come. All right. Can I also please have all the girls back on stage? I read my mind. जो आप लोगों ने की है, आप उसको किस नज़र से, किस लेवल में देखती हैं? क्या आप एक दूसरे से कम हैं या सजा? आप दोनों बताइए। सर, हमें एक दूसरे से कम या होना क्यों है? हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ, एंड यही तो बात हम कह रहे हैं कि हमें दूसरे के अगेंस्ट पिट करने से ज़्यादा अगर आप हमें बढ़ा, हमें अगर इनकरेज करे कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आगे और भी अच्छा बेहतर करें, तो आई फील दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर मैसेज देन अरे आपको उससे अच्छा करना है, किसी और से बेहतर करना है. फील encouragement in the right way and form is very very important, and I'm very proud as we all साक्षी मलिक जिन्होंने इतना इतना बड़ा हमारे देश के लिए. मैं अपने हिसाब से फिल्मों में काम कर रही हूँ, अच्छा लगन से कर रही हूँ. आई होप कि ये मुझे आगे और दूर तक. एक सेकंड, आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? बिल्कुल. कंपेयर क्यों कर रहे हो? वो अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं और मेरी फील्ड में अच्छी हूँ, तो कंपैरिजन तो है. सब अपनी फील्ड में अपने मन से बेस्ट.
आई एम सॉरी, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है और बहुत खराब सवाल है। क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए है कि कैंपेन के लिए हम यहाँ खड़े हैं। आप कैंपेन के बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कि ही करना चाहिए और हमें यही ऐसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़कियों को जो एक साथ खड़ी है एक इतने अच्छे कॉज के लिए, इतने अच्छे कैंपेन के लिए सारे के सामने बोल रहे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट, प्यार करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम भी सब कुछ, तो फिर ऐसे सवाल अगर पूछेंगे हमें कि ज्यादा बेहतर हो तो दिखाइए ना। इसका मतलब नहीं इस स्टेज प्लेटफॉर्म पर इस समझ में क्या बोल रहे देते वरना बानी के मसल्स वापस नो नो आई एम फ्लेक्सिंग माय हार्ट नाउ। मेरे हार्ट के मसल्स फ्लेक्स। मैं बस यही कहना चाहता हूं एंड दैट्स व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट इज विद एवरी थॉट प्रोसेस दैट वी हैव इन। उन्होंने दे दिया आंसर। थैंक यू। Anybody else? Hello, good evening to all. Good evening. Ms. Raj, member of the press. I'd like to ask Sonakshi, what do you think about sporting culture in India? What do I think about sporting culture? You're asking me or Sakshi? Sonakshi. Sonakshi, okay. Well, I think it's something that definitely needs a lot more attention that it is already given. I feel today up till today, I feel cricket was the only sport that was given so much importance. I feel in the recent past, a few other sports have come forward like kabaddi, like badminton, wrestling now because of the awareness after the Olympics and stuff. But I still feel that to reach that level, all sports should be given an equal platform, just like they have cricket. And I feel in that way we have a long way to go. But I feel that when people like Sakshi make achievements like how she has done in the Olympics, that really gives a real good push and boost to the sport in itself, not only to her as an individual, but to her entire sport. And I feel that we going to stand up and take notice and do things about other sports as well in our country very, very soon. In fact, if we haven't already. Ma'am, Sonakshi ma'am, Yes. how important was it for you to make a movie, women-centric movie, for the phrase "like a girl"? Honestly, that was not my intention. When I signed the film, I did not make the movie. There were people who made the movie and who thought I would fit the character. But for me, what really caught my attention was that when he came to me and he explained to the character to me, he said that, you know what, usually we think that only girls who are tomboyish and who behave like boys can fight, and only our heroes are fighting on screen. Murugadoss sir told me that, you know what, no, she's a girl who is proud of being a girl, she dresses like a girl, she wears accessories like a girl, she behaves like a girl, but she knows how to fight and she fights like a girl. So that is something that really, really caught my attention, and I said, you know what, other girls watch this and be inspired. And honestly, till today, everybody who's watched the film, like, I'm still receiving compliments about the acting, about how families are enrolling their children, their girls into self-defense, which I feel is an achievement in itself. Today, when a father comes up to me and says, enroll my daughter in karate class because I saw your film, fantastic thing to hear. So that was my reason behind doing the film, that she can be being a girl but still fight like a girl. मेरा प्रश्न से है साक्षी आपके लिए कि जब पहले अभी आप जीत के आई हैं तो आपको एक बहुत ही मिल रहा है, और जब आप खेल रही थी कभी आपने इस तरह की जो आपकी विन है, मतलब इसको आपने सोचा या फिर अभी आप करती हैं और आपकी जो लड़कियां हैं यंगस्टर उनको देना चाहती हैं? मैंने सोचा था, मैंने भारत में रेसलिंग कर रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक मेडल लाऊं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेडल के बाद मिलेगा। बहुत बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं, इंडिया प्यार दे रहे हैं। अकेली गई थी, पूरा इंडिया जा, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। साक्षी, आपको स्पोर्ट्स के अलावा क्या फिल्में देखी है, और अगर है तो क्या आपने सोनाक्षी जी की नहीं, क्योंकि अभी फंक्शंस में बिजी हूँ, निकाल के मैं जरूर देखने जाऊंगी। देख करके बताना कैसा लगा। मेरा सवाल आपसे, थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, एक प्रियंका ने की थी मैरी कॉम के जीवन पे
साक्षी की तो जितनी मशहूर वो हुई है, भारत को गौरव दिला ओलंपिक्स में, क्या आपको अगर मौका चॉइस यू लाइक टू डू बायोपिक ऑन साक्षी मलिक लाइफ? लव तो अब तो साक्षी ने भी बोल दिया कि आप बड़े पावरफुल, डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। डांस भी अच्छा कर लेती हूँ। देखो आज थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी तो अगर साक्षी पे मूवी बने तो जरूर प्ले करना चाहूंगी उसका कैरेक्टर। यू अप्रूव? हाँ अप्रूव। चलो इनको भी मंजूर है, हो गया। सोनाक्षी मेरा आंटी आपको मंजूर है? चलो मम्मी ने भी हाँ कर दिया। साक्षी सोनाक्षी मेरा सवाल आपसे, आपके राइट में, आपके राइट। जी जी जी। बॉलीवुड में जेंडर बायस ने जानते हैं फीस को लेकर के और सारी चीजों को लेके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं? लाइक अ गर्ल, लोग अभी भी जेंडर बायसनेस है फीस को लेके बॉलीवुड में। बट सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होती है। आप तो आपके जर्नलिज्म में हो या तो कोई बिजनेस में हो या तो स्पोर्ट्स में हो, अभी तक है, जो विच इज वाई हम आज यहाँ पर कैंपेन के लिए ये बताने की ही जब लड़कियां बड़ी होती है तो उन्हें कभी ये महसूस नहीं कर वो किसी से कम है, ताकि आगे जाकर उन्हें ना हो ये जेंडर बायस की। आई थिंक इक्वालिटी इन टुडेज डे एंड एज, जेंडर इक्वालिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। और या सो आई फील आज औरतें पोजीशन में हैं, अपनी आवाज उठा रही आ रही है, बढ़ रही हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, डूइंग वेल इन द फील्ड दैट दे आर डूइंग। इसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रही है और एक बदलाव भी आ, बट हम बहुत दूर है जब इक्वल लेवल पर आ जाए, बट कोशिश चल रही है और जारी। लास्ट क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर का मैच रहता है, चाहे पैरा ओलंपिक्स हो चाहे नॉर्मल ओलंपिक्स हो। मैं लेटेस्ट दीपा मलिक जी से मिली हूँ तो बताई तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बल्कि मुझे उनसे सीखने बहुत कुछ मिला है। और जबकि वो इंडिया के लिए सिल्वर लाए हैं और वो इससे लाई हैं, तो बहुत मतलब बराबर का लेवल भी उनके लिए बहुत कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि भी ज्यादा उनका हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।